Jurassic World. This is where our story begins. A scientific breakthrough without any consideration of the consequences. So nature did what it does and unleashed chaos. This time, we were deeper into the illusion of control, and the chaos brought something much worse. And for a moment, we remembered how precious life is. But time has a funny way of softening our memory of what it's like to lose control. And ambition. Ambition is a persistent thing. For the dinosaurs left behind, time was becoming immaterial. From miracles of science to assets destined for exploitation. Perhaps it's time we reflect on the true nature of nature. An endless cycle with one goal: survival. And this means that dinosaurs and humanity will have to find a way to work out their differences. To us, a desert is a wasteland, devoid of anything but the most extreme examples of life. But creatures once thrived in these lands hundreds of millions of years ago. Given the geological history that we're dealing with, dinosaurs walking among the tumbleweeds isn't that much of a stretch. The current situation, where dinosaurs are running wild, is untenable to those in charge, well, those that think they're in charge. So we're left with a problem or an opportunity. This is where you come in. They've ignored my warnings before, but maybe this time with you, it's going to be different. I'm willing to embrace the uncertainty. Okay, I guess an introduction is in order. I'm Cabot Finch, Assistant Director of the U.S. Department of Fish and Wildlife. I know it sounds important, because it is, but let's not get bogged down in labels and titles and organizational flowcharts. I'll make this easy. You work for me. See, nothing to it. You'll be working with the experts. This is Claire Deering and Owen Grady. And yes, we have first-hand experience with the dinosaurs. I'm the former operations manager at Jurassic World. Owen and I actually helped build the park. And unfortunately, we were there to witness its destruction. And this is Owen. He works with velociraptors. You could call me a dinosaur wrangler, though officially I'm an animal behaviorist. I was just building a level of trust with them when this happens. Okay, so we'll need to get a few things in place ASAP. Start with a response facility, equipped with both a Ranger Team 4x4 And a capture team helicopter.
We are making excellent progress, so let's stay focused. Next step, building a backup generator. Then feeding the energy it creates to the response facility. And also make sure the building is connected to the path network. It only does us good if it's operational. Hey, Claire. We may have trouble tracking this dinosaur from the ground, and even more trouble if we're lucky enough to find it. Then the sensible thing is to take a capture team helicopter. You can trank it from the air. See? I like the way I think. Hmm. Claire, this is Owen. I copy you. We have it. Capture successful. I knew you'd do it. Never had a doubt. Really? Well, maybe one or two. Well, it's better than usual. I'll take it. Now, where do we take this dinosaur? We have the enclosure. We just need you to deliver. Hey, don't I always? Wait, you don't have to answer that. Controls retaken.
up asset. John Hammond was concerned about what would happen if dinosaurs lived in the wild. It adds a whole new level of challenge, and perhaps opportunity. Asset transportation in progress. Delivery complete. Whew, I instantly recognize this dinosaur. Kinda hard to forget once you've been trapped in a room with one. We couldn't save that Baryonyx, but we can certainly help this one. There's not a lot out there for the dinosaur to consume, so we'll need a feeder inside the perimeter of that enclosure. Hungry dinosaurs make me nervous. Can't disagree with you there. Good to go on this end. Copy. Okay. We need to get a full assessment of the dinosaur's health. Utilize a ranger team vehicle. Owen will help you get a status of the animal's overall welfare. Then we can plan our next move. We really need that? A plan? I mean, I've always been more of a just make it up as I go kind of guy. Tell you what, if this doesn't work, we'll try your way. That sort of sounds like a plan. While we can't replicate what we had on the islands, we still have to do what we can to get the dinosaurs more comfortable with their current surroundings here in Arizona. Sunscreen and drinks by the pool? How's that sound? Are you seriously asking? Or pretend asking? Okay, Claire, how about we add some preferred terrain to their pens instead? Better? What's up?
मैच चल रहा हो अभी तो। क्या खेलना है आज रात में? आरपी आरपी कर रहे, तेरा हो गया व्हाइट लिस्ट? ये लोग आरपी आरपी कर रहे थे। नहीं मेरे को बोल रहा था आरपी खेलेंगे। मैं हाँ तो वैलो ही हो रहा फिर। वैलो ही हो रहा। हाँ, जब मेरे को घर जाना रहता तो ये उधर है पुणे में बारिश है। आज तक कैंप किधर गया था तू घूमने? वो फोटोज। Where were you going, boy? तो तूने अभी फोटो डाले लास्ट सेकंड की? अभी तो डाले थे तूने झरना वरना। अच्छा पुणे साइड पे ही है क्या वो? अच्छा तामिनी मतलब वो। मैं सोच रहा हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि गांव साइड चले जाऊँ, उधर मस्त जंगल वंगल में डिस्कवर रहता है ना, वैसे वाले जगह पे। लास्ट टाइम हम लोग गए थे, कोई किसी को पता नहीं, अपना महाड़ साइड गए थे। वहां पे एक वाटरफॉल था, किसी को पता नहीं था, सिर्फ विलेजर्स को पता था, तो हम लोग को लेके गए थे। उधर ही हम लोग ने चिकन विकन कुक किया था। वहां किया फुल बियर बियर का बॉटल झरने में डाल के रखा ठंडा होने के लिए। पर वो मतलब एक्सप्लोर्ड रहेगा ना, लोग जाते रहेंगे नॉर्मली। इधर सिर्फ गांव वाले लोग जाते हैं वैसा वाला। हाँ। We've got to monitor these भाई dinosaurs more जो मजा आया था closely. ना हम लोग That ने means सुबह setting से up a लेके ranger शाम तक, post सिर्फ inside हम their लोग 4 ही enclosure. जने It sounds वाटरफॉल में। crazy, I know, but this'll work. Trust me. बहुत मजा आता है ऐसे लोग, ऐसा रहता है, प्राइवेट काइंड ऑफ फील होता है ना। तो अभी अलीबाग का प्लान करते हैं, नैनी के इधर जाएंगे तो कहाँ। नैनी बोल रहे हैं कि उसके इधर रिसोर्ट बुक करेंगे। हाँ तो ऐसा कर सकते हैं। बच्चा ना बोल रहा है, अभी बच्चे को पूछा तो ना बोल रहा। हाँ, उसको पैकेज उसको बोला किडनैप कर लेंगे उसको। उसको बोला है कि एक काम करना कि ऑफिस की तरफ से बोल देना, जहाँ पे इंटर्नशिप किया ऐसा। I'm getting reports of dinosaurs running है ना, तो वो freely तो हो ही around the जाएगा उसका। facility, Claire. The reports may be accurate, but they don't paint a complete picture of our current status. Angry dinosaurs on the loose. What am I missing? They're not angry, they're simply acting on instincts. The more threatened the dinosaurs feel, the more hostile they'll become. Especially if they sense survival is at stake. But it is. Both theirs and ours. Yeah, but only we know that. Well, for now, anyway. We'll start by tranquilizing one of the dinosaurs from the helicopter, and then have a transport team bring it back to the facility. Great. Do it. कौन सा क्या है इसमें? ये जोरा से खेला है मैंने शायद से। क्या बात कर रहे हैं, इसमें क्या है? What do we have in this? अच्छा मतलब क्राफ्टिंग वगैरह ही है ना इसमें भी? तो इसमें अकेले खेल सकते हैं, कोऑप खेल सकते हैं? टीम पे है, मैं भी ले लेता हूँ फिर। मेरे को भी कोई ऐसा गेम चाहिए जो एक्सप्लोर करने लायक है। मैं सोच रहा था कि बॉडी गेम ले लूं करके, बॉडी गेम भी मेरे को ठीक ठाक लग रहा था, पर बॉडी गेम वन टाइम प्ले।
क्या बात कर रही है, तो गए तो अभी ले रहा हूँ मैं जाके फिर। आई लाइक डिस्काउंट। है क्या इंटरेस्टिंग है, करने का। स्ट्रीम कर सकता हूँ ऐसा वाला। अरे फिर भी एक स्कैम बता दो मेरे को, अच्छा वो याद आया। मेरे को है ना, मेरा एक्सबॉक्स स्ट्रीम करना था, तो मैं क्रेयो का सोच रहा था कि ये गेम कैप्चर लूंगा, ठीक है। देन मैं इधर गया, लैमिंटन गया, ठीक है। लैमिंटन में ना वो एक था गेम कैप्चर 1800 बोल रहा था, ठीक है, पर उसको पता नहीं कि वो क्या काम करता है। तो मैंने उसको बोला कि भाई ये क्या काम करता है, तो बोलते है पता नहीं पर लोग लेके जाते हैं। मैं बोला "ले, सस्ता मिलता है, आपको पता नहीं"। तो उसने बोला कि देखो कोई खरीदता तो है नहीं, तो आप प्राइस बोल दो आपको कितने में चाहिए। मैंने बोला 200 में दे दो, तो उसने मेरे को 200 में दे दिया। अरे भाई वहां के सबकी कौन सा खरीदा है? अरे कोई है 1200 वाला, अननोन कंपनी है। तो मैं 200 में लेके आया। मैं बोला ना कि ये चल रहा नहीं है, पटक के देखता हूँ तो चल गया। अच्छा वो उस दिन वाला ही ना? हाँ उस दिन वाला। तो 200 में मेरे को गेम कैप्चर कार्ड मिल गया भाई। मैंने उसको बोला कि तेरे को पता नहीं क्या काम करता है, मेरे को भी पता नहीं क्या काम करता है, तो मेरे को दे दे, मैं ट्राई कर आ, भाई बहुत सही हो गया, मालूम है, घर पे आके लगा एक्सबॉक्स। हाँ, तो कार्निवरस रहेगा वो। कौन सा गेम खेल रहा है? जुरासिक वर्ल्ड एवोल्यूशन? वो कार्निवरस रहते हैं ना, ट्राइसॉरस, कुछ ऐसा ही था। वाह, ये सब भी रखा है तुमने, इंटरेस्टिंग। ये बच्चे तेरे को स्टडीज नहीं है क्या, तू कैसे आ गया इधर? भाई सुबह से वही तो कर रहा हूँ भाई, थोड़ा देर तो शांत रखा करो भाई। अभी भी कर। क्या हुआ? हट। क्या हुआ? ये तेरे को दो गाली दे रहा है मिनट। बच्चा। दो, हाँ वाह। बोलता है मेरे कि को चिमनी गाली से नहीं गधा देगा, बोलते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अनलाइक तू, मैंने उसको नहीं बोल, मैं बोला तू बना जब बना सकता है। मैंने भी कुछ नहीं बोला, मैंने भी बोला जब तू बना अभी के साले में दिखाऊंगा आया, बना के पहला बोलूंगा। शब्द यही तू बोला कि अभी बना। सिर्फ मैंने बोला क्या? खो तेरे कितना बच्चे से काम कराएगा तू? रे तू खेल वही रहे, तो तू खेल। चाइल्ड लेबर करवा रहे। हाँ सच्ची में चाइल्ड लेबर एकदम बराबर बोला। केस भाई कर दे। चाइल्ड चाइल्ड लेबर में इससे गंदा कराता हूँ, देखना है क्या? नहीं पर तू चाइल्ड को तो तू हायर ही नहीं करता। मैं चाइल्ड लेबर हायर करता हूँ, पर वो थोड़ा अलग प्रोसीजर है मेरा। वो अनऑफिशियली करता है। क्या तू क्या क्या करवाता है चाइल्ड से? भाई पर वो इंडियन नहीं है, इतना बोल ओ सकता हूँ मैं। मयंक भाई बताओ कैसे भी बच्चे बढ़िया सब एकदम। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। मैं आज है लेट तक, फिर मैं कल से नहीं है 5 दिन, तो जो खेलने के आप खेलेंगे। आज सब गेम खेलेंगे बाय। कस्टम खेलना है तो तुम लोग खेलना, मैं दूसरे गेम पे आ रहा। तो कुछ और खेलते हैं ना फिर। कस्टम पे जान कंटाला आता है बे, 3v3 में। तो कुछ उससे और अच्छा तीन खेलते तीन हैं। का अलग अलग स्क्वाड बनाओ और साला कॉम खेलो जाके। चलो फिर। हाँ वो भी ठीक है। किसका मैसेज? क्रॉन्टन का ही मैसेज आ रहा है, क्या खेल रहे हैं? रेडी भी आएगा। अरे मैं तो सोचो वापस किंगडम कम चालू करूँ। 6 जन के लिए ना साला मार्वल राइवल्स बेस्ट है, पर तो तुम लोग आते ही नहीं। नहीं मार्वल राइवल्स 5 है ना, नहीं ओवरवॉच, ओवरवॉच में 6 है। अबे फ्रेंड्स नोटिस किया, हाँ पहली बार क्या? कोई फॉरेस्ट का गेम है जो हम लोग सबको खेलने का, पर आईडी खुद नहीं खेल रहा। एक्चुअली क्या? कोई कल भी खुद ही बोला वो नहीं भाई वैलो खेलते हैं, बोला अरे मैंने उसको आज ही बोला, पर मैं वेडनेसडे से एक बार आरपी चालू करेगा तो मैं फिर मैं साउंड खेलूंगा, पर मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं रहेगा ये। अरे वो सन्स ऑफ द फॉरेस्ट एक्चुअली है ना, कंफ्यूजिंग हो रहा है क्योंकि सब अपने अपने मर्जी से कर रहे हैं, समझा? तो क्रॉन्टन अपने मर्जी से घूम रहा है, तो आईडी को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि आईडी को बिल्डिंग पसंद है, समझ रहा है तू? इसलिए आईडी इग्नोर कर रहा होगे।
तो उसको हमसे प्रॉब्लम है कि क्रॉन्टन से प्रॉब्लम है खेलने में? हेलो, बाहेरच आहे गेटवे. अच्छा, क्या खेलना है फिर रात को बताओ? अभी ये मयंक जो बोलेगा. भाई बताओ. 8 से ज्यादा ही होंगे. फिर कितने होंगे? 6 होंगे. अगर स्टॉइक आया तो 7 हो जाएंगे. नहीं, अगर 6 हो रहा है तो फिर मैं निकल जाऊंगा ना, मैं काम कर लूंगा, मेरे को कुछ तू फर्क नहीं कैसे पड़ता. निकलेगा? आता अमंगस मैं रुको आधे घंटे अगर में. कोई आएगा तो कोई और एक दो जन को बुला सकते तो अमंगस खेल सकते हैं अपन. Transporting asset. Transit अमंगस has खेल सकते हैं अगर commenced. लोग आ जाएंगे आज तो. मैं तो वहां लेट तक हूँ मैं. हाँ रे, मेरे को भी कॉम खेलने का मूड हो रहा है आज. चलो. अरे क्या, मैं अभी रुक, मैं खाना आगे मार रहा हूँ 10 मिनट में. हे भगवान. Confirming asset delivery. Asset has been delivered. Asset transportation complete. Overall, चल I'd दिया. say our operations are improving. I'm confident we may get a handle on this yet. But I'm also concerned, specifically about our biodiversity. Still, for now, let's focus on getting the dinosaurs safe and secure, as well as building some additional viewing galleries the DFW staff can use to monitor the animals.
Reporting asset status. With so many of the animals running free, our priority has to be capturing as many of them as possible. We can coordinate our efforts from an expedition center. Get one built, and we'll take it from there.
I'll be able to track the dinosaurs, but some help would sure be appreciated. Claire tells me there are some candidates to recruit. Scientists. Hopefully you can find one as rough and tumble as I am. You seeing this, Claire? Yeah, I sure am. This is our first live capture opportunity. Let's not miss it. We should assign that scientist you just hired to the task. Agreed? Owen, you there? I think you're still muted. Oh, yeah, sorry. Good idea. What do we got to lose? You know, except maybe a new recruit. Before the remote capture teams return, we should have enclosures ready for the dinosaurs. Think of it as welcoming them back home. I have a 95, 2318.
Transportation underway. Asset in transit. Asset transportation underway. Transportation complete. Asset has been transported. Delivery has been completed. Okay. Who's watching who? I'm not following you, Owen. Well, it's just like the dinosaurs are always watching us, so shouldn't we be watching them? Yes, we should. Once we have the dinosaurs comfortably settled into their enclosures, we'll need viewing galleries. That's what I'm saying. Only, you said it. बहुत तेज गर्मी है रे, बहुत गर्मी है। साला, भाई कोई आ नहीं रहा तो तब तक भाइयों एक कॉम्प लगाना है क्या फटाक से? मेरा खाना बाकी है, अभी मैं अरे जाऊंगा खाना खाने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो करो। तो मैं भी फिर आता हूँ, एक काम करता हूँ, करके आता हूँ। हाँ,
Owen. Owen, we have a real problem. I'm trying, Clara, but it's just... Well, this is who I am. Not you. Ah, the dinosaurs. Tell me something I don't know. Okay, how about this? There's a massive sandstorm headed our way, and it could wipe out the facility. Without power, the safety of the dinosaurs could be at serious risk. Okay, listen to me, Claire. We'll figure this out. Have I ever let you down before? Actually, no. And I'm planning on keeping it that way. Everything we can do, we will do. We've survived worse. What's a little sand? I gotta say, I'm feeling pretty concerned about our current situation. As much as I'd obviously love to help out, I'm a little tied up. So, who's gonna protect the dinosaurs? And our personnel. Yes, of course. I mean, that goes without saying. I'm saying it anyway. It's just, it would be a tragedy to lose these animals again. And by tragedy, I mean huge financial loss. And obviously an embarrassment to those in charge of the DFW. People such as you. Well, actually, exactly me. So, how do we avoid that? Okay, step one, round up the stragglers and get all the dinosaurs back into their enclosures. Then we'll work on their safety ratings. This good? Yes, this is a plan I can support now and take credit for later. Tranquilization complete. Reassigning. Controls. Attention all personnel. The sandstorm is starting to pass. Please resume your normal working activity. Asset requiring collection. Asset being transported.
Set delivered.